Very good afternoon to all of you guys. I hope that I'm audible and visible, right? Just let me check, guys, whether everything is. Sure, I hope sure everything is fine. Yeah, am I audible? Just let me check, guys. Yeah, so as you can see on my mobile that I'm audible as well as visible, right? So once again, very good afternoon. I welcome all of you to this today's session. Right. In today's session, we will learn some basic of DI. Basically, how to solve DI questions and how fast you can solve DI questions. Right. Because many students feel problem in calculation part, finding whether percentage or ratio and so many different things in this DI concept, right? So that I'm gonna tell you guys कि कैसे आप easy way में यहाँ पे और कम समय में solve कर सकते हो, ठीक है? So चलो फटाफट जुड़ जाओ और कुछ आपके friends हैं जिनके साथ आप share करना चाहते हो तो share कर लो. We will start the session in 2 minutes, right? 2 मिनट में हम लोग session को start करेंगे guys. So in the meantime, if you want, you can share with your friends, right? So come on, share it, guys. We will start the session in 2 minutes. Chalo. And if you feel any problem, you can write in the comment box that you are facing any problem, right? So the basic part here is what? I know that the questions of DI that I took here is very easy. That many of you will agree that definitely you can solve. But how much time you will take here to solve this question, that is very important, right? कितने समय आप लेते हो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? क्या आप जल्दी सॉल्व कर पाते हो या क्या आपको एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक एक मिनट का टाइम लग जाता है? So this is most important thing, guys, that you need to understand here, right? So that's what I'm going to tell you in today's session. Chalo, so let's start. The question says that the table shows the percentage of students who passed in a scholarship exam conducted for students of class 6 to 10 in a district, right? So the students in a district, the class 6, 7, 8, 9, 10, right? And the students field is given 145, 174, 147, 144, 165, right? The question says that the table shows the percentage of students who passed. This is the percentage of students who passed, right? So everyone know if 80% of the students passed, that means what? Definitely the 20% students would have been failed, right? Obviously, because the total will be 100%, so the fail percentage is what? 20%. Here 70, so this should be 30%. Here 65, so this should be 35%. This is 55, so this should be 45%, right? And this is 70% passed, which means this should be 30%, right? So now this is what given. The next is the question asked how many students from class 7 passed in the exam. So this is class 7, guys. So in class 7, how many students passed? 70% of the students passed and the 30% is failed. So what is mentioned here that the 30%, the value of 30% is given, which is nothing but 174. What will be its 100%, right? So can you quickly tell me in the answer which options will be the correct one? We need to calculate the 100%. This is the one way to calculate is 174 divided by 30 into 100. This is the one way, guys, right? You can divide it by 0, 0, you can divide it by 3 and you will get this is 5 and you will divide, you will get 8 and you will say that the total students is 580 and then you are going to find out this is 70% which is 10 or directly you can calculate the 70% also. How we can calculate? This is
instead of dividing it by multiplying with 100, you can multiply it with 7 also, and you will get the same thing. This is 55, right? So what we can say, the answer will be definitely 406. In other words, also we can say, suppose if this is 30%, so what will be the 2 times of 30%? This is definitely 34. Sure. And what will be 3 times? This is 51. So definitely we can say that the 70% that we want is nothing but less than 500, and definitely it will be more than 340, obviously, right? And much more greater than 340. So which means, so 60%, you can say the 60% is nothing but approximately equals to 340, and we need to calculate 70%, which is nothing but one third of this, and this is close to around 60. So definitely the answer will be somehow close to 400, right? That's we can say. That's we can figure out here. The answer will be close to 400. If the answer is close to 400, definitely we can say the answer will be 406. It cannot be 362. It cannot be 384. It cannot be 420. So that's how we can solve the questions in the coming questions also. How you can solve the questions in easier way, that I'm going to tell you here. So as you can see in the questions here, if I ask you what will be the answer of this, definitely many of you can answer, right? So come on, first of all, I'm waiting for your answers, and then I will explain you how you can solve these questions, right? The question says that table shows the percentage of students who passed in a scholarship exam conducted for students of 6 to 10, right? So the information given here is exams failed is given, student passed is given, the both, right? The question says the most number of students who wrote the exam are from which class, right? The most number of students who wrote the exam are from which class, right? So what you can see, this is 80%. So here you can check that in percentage which value is lower, and in students which value is more, right? In other words, we can say, suppose this is 20%, right? And this is 20% is 145. This is 30%. 30% is 174, right? This is also 20%, and this is 147. So if this 20% is more than this 20%, so which means this cannot be the answer. So 6 cannot be your answers, right? So option A cannot be your answers. Next, here we can say this is 55 and this is 45. So the answer will be definitely close to 300, right? Not more than that. So 9 cannot be your answers, right? The next here, this is 30%. So your answer will be, you can say this is 2.5 times approximately, and this is 32, and 8, this is 4. This is exactly 5 times. This is, and 14 5 is 700. So this cannot be your answer. So 10 cannot be your answer. Now we are left with 7 and 8. So this is 7 and this is 8. So 20% is 147 and 30% is what you can calculate, guys. If 20%, just you need to check the 10%, right? If 20% is 147, what will be its 10%? Just divide by 2. What you will get is, this is approximately 73.5, right? And this is 30%, that is 174. If you divide it by 3, you will get 10%, and this is nothing but 58. Now you can check whether the 10% of this is greater, whether the 10% of this is greater. Definitely we can say the 10% of this is greater, which means there will be the maximum number of students 8, not in class 7, right? So we do not need to calculate the number of students, exact number of students in all the classes, right? What we just need to check that which can be the greater one, and approximately, definitely you can answer here, guys. Definitely you can answer here an approximation basis, right? Chalo, moving to the next question. And what we can say here, guys, this is the third questions. Come on, check and answers me if you can answer, right? I'm just waiting for your answers. Maybe you can answer here. Chalo. So here we can say, guys, the table shows the percentage of students who passed. Again, this is the table given is same. No need to read it again and again. The number of students who failed in class 10 is what percentage less than that in class 10, right? So class 9 में कितने students fail हुए हैं? This is 144. And class 10 में कितने students fail हुए हैं? 165. Definitely everyone will say कि sir
21 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे कम फेल हुए और 21 यहाँ पे फेल हुए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है समझना कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल्ड हुए हैं इन क्लास 9 में, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट इन क्लास 10th। क्लास 10th में जितने फेल हुए उससे वो कितना परसेंट लेस है वहां पे। तो क्लास 10th में कितने परसेंट फेल हुए हैं गाइस, उससे वो कितना परसेंट लेस है। तो यू कैन से कि 21 लेस है, तो यहाँ पे मुझे चेक करना है, तो दिस इज ऑल्सो 21 लेस। now 21 less with respect to 165 into what answers can we mark? The 10% will be nothing but 16, and you can say this is 5 left, which is around 4% or 3%. So the answer will be somehow around 14%, approximately we can say guys. So the answer will be 14.1%, right? Chalo, moving to the next question. This is the table shows the percentage of students who passed in a scholarship exam conducted for students of class 6 to 10 in a district. Right? क्या है हमारे पास? The table shows the percentage of students who passed in a scholarship exam. Again, the information given is same. The question what asked here, just check it. What is the difference between the number of students from class 8 who wrote the exam and the number of students who passed the exam from class 7? तो just difference निकालना था आपको कि the number of students from class 8 who wrote the exam. तो class 8 के आपको क्या चाहिए? टोटल निकालना है, and then the number of students who passed in exams from class 7. तो क्लास 7 में कितने पास किए? तो देखो द फेल्ड इज 30% विच इज 174, एंड यू कैन सी कि अभी हम लोग पास निकाले थे इसका कितना स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चंस में, दिस इज 406, राइट। एंड यहाँ हम लोग के पास क्या था कि डिफरेंस निकालना था 8 में टोटल कितने अपियर हुए होंगे, राइट। तो 35% आपके पास गिवन है 145, राइट। So 35% is known as 147. We need to calculate here exact 100%. How we can calculate? 147 divided by 35 into 100. That's it. 5 this is 20 times 5, this is 7 times 7, this is 2 and 1. 21. So we can say 420 students. So the difference will be nothing but 420 minus 406, and which is 40. As simple as that, guys. So here the option is not given, so we will write the answer as 14. The difference will be definitely the 14. Chalo, moving to the next question. Here in this question it says the table shows the percentage, again the same information, right? For the first 5 questions data is same. What is the total number of students who wrote the exam in the district from all the given 5 classes? Total number of students, that means what? We need to calculate the total everywhere, guys. Yes, exactly, everywhere. So here we know this is what? 406, the total number of students, right? Okay, just keep in mind one thing, guys, that here the 406 was the past students, right? Yes, exactly, the past. So very good. And here the past is 406, total will be 580. You have to add this 174. So this is 580 here total. Now just now we calculated the total in this class 8 is nothing but 420. So that's also we can write the class 8 total is 420. Now we need to check what is. So as you can see, guys, this is what? 20%. Right, 20%, which is 1 by 5. If you multiply it with 5, definitely you are gonna get 100%. So if you multiply with 5, you will get 725. So that means what? We got the total students for class 6, class 7, class 8. Now we need to check for class 9 also. And class 9, this you can say this is 45%. And we need to calculate 100%. So how we can do? 144 divided by 45 into 100. This is 520 times 5, this is 9 times 9, this is 16 times, and 16 2 is 32. So कितना कैलकुलेशन आपको याद है उस पर भी निर्भर करता है, उस पर भी डिपेंड करता है आप कितना जल्दी बना सकते हैं.
Now this is again 30% is given. We need to calculate the 100%. So 165 divided by 30 into 100. 0 will get cancelled. 3 से divide कर दो इसको 55 times में, and this is 550. Now we need to add all these. This is 5. So 5 and 8 plus 2 is 10 plus 5 is 15 plus 4 is 19. So this is 9. 1 is left. 5 plus 4 is 9 plus 1 is 10 plus 3 is 13 plus 7 is 20 plus 5 is 25. So we got the total number of students that appeared for the exam in all the classes together from 6 to 10 is 2595. I hope this is clear to you guys. Right? So जितना fast calculation, थोड़ा एक चीज important यहाँ पे ये भी है कि if you guys know the tables, right? If you know the tables, then easily you can calculate. Right, else you will take some more time, a little bit more time. Chalo, moving here. So I'm just going to make you understand that what it question says. The directions from question number 1 to 5 again. These questions are based on the following data, and the data says that the percentage growth in sales turnover of 5 companies over the respective previous years. Right. So the percentage growth in sales जो given है वो हर एक कंपनी का प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में गिवन है. दैट मींस व्हाट, 2014 की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, लेट अस से फॉर एन एग्जांपल मैं 2014 का डाटा लूँ, उसमें अगर 100 बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो गया, 10% बढ़ के कितना बन गया होगा, ये 110. उसमें 20% विच मीन्स 22 बढ़ के ये कितना बन गया होगा, तो 132 एंड सो ऑन. आगे हम लोग जो है होगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस आगे चेक करेंगे. ठीक है, चलो मूविंग हियर. क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं. तो बोल रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज द परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स टर्नओवर हाईएस्ट फ्रॉम 2014 टू 2017. किन में सबसे हाईएस्ट है. वी हैव द ऑप्शन ए, बी, डी एंड ई. तो ए, बी, डी एंड ई, दिस 4 वी हैव टू चेक, नॉट ऑल द 5. राइट. तो चलो फटाफट देखो कि कितने लोग जो है वो यहाँ पे आंसर्स कर सकते हैं. चलो क्विकली यहाँ पे ट्राई करो गाइस टू आंसर हियर. चेक कीजिए कि आंसर्स क्या होगा. टेक योर 2 minutes टाइम, टेक योर 2 minutes टाइम एंड ट्राई टू आंसर्स. बाय द वे दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ 2 minutes, राइट? बट आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम. जस्ट सॉल्व एन आंसर. You have to check the percentage growth in sales turnover highest from 2014 to 2017. 2014 से 2017 में किसका highest है? As you can see 2014 से 15 में 10, 15 से 16 में 20, 16 से 17 में 30. So that's it, you have to check and answers करना है. एक चीज मैं बता दूं गाइस कि अगर यहाँ पे किसी का सम ही कम है, ठीक है, तो फिर तो वो ज्यादा हो भी नहीं सकता. जैसे एक एग्जांपल लो कि यहाँ 10 है, 20 है, ये 30 है, यहाँ भी सम 30 है. इनको सॉल्व करेंगे तो 32 मिलेगा और इनको सॉल्व करेंगे तो 32.25 मिलेगा. मतलब जितना क्लोजेस्ट होंगे, सम में भी सेम है बट जितना क्लोजेस्ट होंगे वो नंबर्स उतना ज्यादा आपको वैल्यूज मिलते चला जाएगा. ठीक है. सो ए है, बी है, यहाँ पे 30 प्लस 20 50 प्लस 10 इज 60 आ रहा है, यहाँ पे भी 60 आ रहा है. तो यहाँ एज बिकॉज इन दोनों का ही ज्यादा हो गया, बाकी यहाँ पे तो ज्यादा, तो ए कैनॉट बी योर आंसर्स, तो ए नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो. नो कमिंग टू डी. तो यहाँ पे हमारे पास 30 है, फिर 20 और 5 25 है, यहाँ पे 30 था, फिर 15 और 15 30 था, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. देन ई की बात आती है, तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ 28 लेट अस से दिस इज 30 और यहाँ पे 20 प्लस 12 है. इन दोनों का जस्ट चेक करोगे गाइस तो कितना होगा, दिस इज 32 प्लस 2.4, दिस इज 34.4%, राइट. एंड उसमें 28% और बढ़ाना है आपको. और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये क्या होगा, अब ऑप्शंस बी और जो ई है, बी और ई, उसको क्लोजली आपको थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है. तो बी को अगर चेक करते हैं तो बी में क्या है, दिस इज 15 देन 15 एंड देन 30.
तो इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट 15 प्लस 15 इज 30, सो दिस इज 32.25%, प्लस उसमें 30 ऐड कर दो तो यू विल गेट 62.25। एंड 30 एक्चुअली क्या होता है कि a प्लस बी के फॉर्मूले पे अगर हम पुट करते हैं तो दिस इज a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, राइट। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि इन अदर वर्ड्स आप समझ सकते हो कि 32.25% अगर किसी का इंक्रीज हो गया है तो दिस बिकम्स 132.25। इसके 10% कितने होंगे गाइस, डेसिमल यहां पे पुट कर दो 13, 30%, 13 3 इज 39, तो अप्रोक्सीमेटली 39 के आसपास आएगा। 39 और 40 अगर यहाँ पे कर दे, कम ही होगा उससे, बट 40 अगर कर दे तो दिस इज 172, क्लोज टू 172, मतलब 72% के आसपास आएगा। यहाँ पे ये मेरे पास कितना आ गया, दिस इज 134.4, और इसकी कितनी कैलकुलेट करनी है मुझे, 28%। तो मैं अगर यहाँ पे 10% इसकी कैलकुलेट कर दूं तो ये 13.4 होगा, 30% निकाल लो तो अप्रोक्सीमेटली 40 हमारे पास आ जाएगा, बट 2% कम कर देना है इसमें, तो 2% कितना होगा 1.3 और 2% 2.6, तो इसमें 2.40 यहाँ पे ऐड कर दो गाइस, तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज 174, और उसमें 2 पॉइंट समथिंग ऐड कर दोगे तो 172 से छोटा चला जाएगा, तो विच मीन्स द आंसर्स विल बी बी, एंड दिस विल गिव यू द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। What we are gonna get here is that again the information given here is exactly same. Let's check. The question says that company D had earned a profit of 41 crores, which was 25% of its sales in 2017, right? What was its sales in 2014 approximately? That we need to calculate. So given क्या है हमारे पास, that company D had earned a profit of 41 crores, right? Which was 25% of its sales in 2017. 2017 में टोटल जितना सेल्स हुआ है, राइट, तो यू कैन से कि उसका 25% जो है वो 41 करोड़। 17 में कितना सेल्स हुआ है डी से निकालना है, तो यहाँ पे पहले 2014 में मान लो 100, और देखो कितना बढ़ गया, तो 30 और 20 को अगर ऐड करोगे तो दिस इज 56% आ जाएगा, उसमें 5% और बढ़ा दो तो 56 प्लस 5 हो गया, एंड देन 56 इंटू 5 बाई 100, राइट। तो चलो 5 से इसको 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, एंड दिस इज 28, तो 56 प्लस 5 हमारे पास क्या हो गया, दिस इज 61, और उसमें 2.8, सो दिस इज 63.8%, राइट। तो मेरे पास अगर यहाँ 100 था 2017 में, बन गया 163.8%, और यू कैन से 163.8x। अब इसका अगर आप 25% निकाल देते हो, ठीक है, विच इज 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 41 करोड़। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज the sales in 2014, which is nothing but 100x. So how we can calculate that? 100x will be equals to, if you take this 4 this side, you will get 41 into 4, so divide by 163.8 and multiply with, divided by 163.8 and multiply it with 100, right, multiply here. What you are gonna get is divide it. Let me write here. So this is 41 into 4 into 100 into 10 divided by 1638. Approximately how much we can get, right? So according to the options also you can check if this is 100 crore, so right. So guys total हमारे पास जो इसका 1/4 होगा वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, this is 4 times 3, we cannot cancel out, then you can say this is 0, and this is 40.4 is nothing but 41 approximately we can say. तो दैट मीन्स व्हाट आंसर्स क्या हो जाएगा, 100 करोड़ के आसपास आ जाएगा, बिकॉज 40.4 करोड़ जो है वो इक्वल टू 41x है, तो जो 100x होगा वो इक्वल टू 100 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चीजें आप यहाँ पे एनालाइज कर पाते हो इन दैट केस। आ रही बात समझ में? हमेशा हर क्वेश्चंस में पूरा कैलकुलेशन करके ही सॉल्व करना है जरूरी नहीं है। Now coming to the same questions, the data is here is also same. We need to answer here that in 2016 the sales of company B and company D are 100 crores and 130 crores, right? In 2016 the sales of company B and company D, इन दोनों का sales दिया हुआ है, that are 100 crores and 130 crores. What was the ratio of their sales in 2014? What will be the ratio of their sales in 2014? That you need to calculate, right? तो देखो 2016 में आपके पास सेल्स ऑफ बी एंड डी आर 100 and 130 करोड़, तो 2016 में बी
इसका दिया हुआ है 100 एंड डी का दिया हुआ है हमारे पास 130 करोड़. दिस इज इन 2016. एंड व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द सेल्स इन 2014 दैट वी नीड टू कैलकुलेट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस? बी का ले लो 100 बी फॉर एन एग्जांपल. उसमें क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है 2016 में निकालना है उसका, राइट? 2016 में तो कैसे आएगा? 100 टाइम्स ऑफ बी इनटू 1 पॉइंट कितना बड़ा था ये? पहले 15 देन अगेन 15. So this is 1.15 into again 1.15, right? Divided by the same here for D. This is 100D into this is 1.05, right? Into this is 1.3 or you can say 1.30. And that is equals to 100 crores divided by 130. So let this be as it is, because we need to calculate what was the ratio of their sales in 2014. Let's say this is as it is and just take everything on the other side of equal to. So what will become? Take this 100B upon 100D as it is and write rest of the things on the other hand. So this will become, as because 130 you can write it like 10. So this is 10 by 30. That 130 will multiply in the numerator part. This is 1.3 and 1.05 also into 1.05 and divided by 1.15 into 1.15, right? So now as you can see this point, if you divide, you will get here this 10 and this 10 and 10 will get cancelled out. This 13 and 13 also gets cancelled out, right? So this 0.05, the 0.05 will also get cancelled out. From 5 you can divide, you will get 21. From 5 you will divide, you will get 23. Now this 100 is here. Take, for 5 you will divide, you will get 20 times. 5 you will divide, you will get 23 times. So this is 529 and 21 into 220 is 420. So what we will gonna get the ratio is option A, राइट? तो यहाँ थोड़ा सा एज बिकॉज थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में जो भी टाइम लग जाए, बट दिस इज द ओनली कैलकुलेशन. क्या करना है? इसके परसेंटेज को उसके वैल्यू से 100 से मल्टीप्लाई. 2016 में कितना था? 130 करोड़ था. बोल रहा हाउ मेनी कंपनीज हैड सेल्स बिलो 100 करोड़ इन 2014. किसका 100 करोड़ से ज्यादा था, बिल कम था? तो देखो गाइस, अगर किसी का भी यहाँ पे परसेंटेज, सपोज करो कि यहाँ पे अगर 100 है, 30% बढ़ा और 130 होकर के वो 1 करोड़ लेकर के 130 करोड़ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 से कम नहीं है. बट अगर यहाँ पे 90 30 से छोटा में है, सपोज करो 100 है, उसको मैं 20% बढ़ा दूं और बोलूं कि 130 बन गया, राइट? तो इसका मतलब है पक्का यहाँ पे 100 नहीं था, 100 से वैल्यू बढ़ा था, क्योंकि 100 होता तो 120 बनता. और अभी यहाँ पे 130 है और मैं बोला कि किसी को 40% बढ़ा करके किया, तो इसका मतलब क्या है कि श्योर वो 100 से छोटा होगा, क्योंकि 100 रहता तो 140 हो जाता. तो वही आपको चेक करना है कि 2015 एंड 16 में जो हमारे पास ये परसेंटेज गिवन है, उनका सम कहां पे 30% से ज्यादा हो रहा है. जहां भी 30 आया मतलब 100 था, 30 से ज्यादा हो गया मतलब 100 से कम था. हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या कि सेल्स बिलो 100 करोड़ था, तो यहाँ पे 20 प्लस 30 आ गया, तो इसका मतलब 30 से ज्यादा क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकलेगा. तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये लेस में है. यहाँ पे भी 30 आ गया, ये भी लेस में है. यहाँ पे चेक करेंगे बाद में, यहाँ पे भी ये भी डेफिनेटली लेस में है एंड ये भी डेफिनेटली लेस में. अब इनको चेक करते हैं तो क्या मिलता है? दिस इज 28 प्लस 20 इंटू 8 अपॉन 100. सो दिस इज हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स 1.6. तो दिस इज 29.6 आया, 30 नहीं आया. इसका मतलब पक्का ये 100 से स्लाइटली बड़ा था. 100 भी नहीं, उससे बड़ा था. तो 100 के बिलो में नहीं आया. तो बिलो में कौन कौन आ गया? ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया एंड डी आ गया. सो बोल रहा है कि हाउ मेनी कंपनीज? सो टोटल देयर आर 4 कंपनी, राइट? And the name of that companies is A, B, D and A, right? Chalo, moving to the next question. So next the information is again same. We need to answer these questions. By what percentage is the projected sales of company C? Projected मतलब ये जो projected for 2018 के लिए बोल रहा है, C का for 2018 more than its sales turnover in 2014. कितना परसेंट ज्यादा होगा? प्रोजेक्टेड है सी का वो 2014 से.
तो जस्ट आपको पूरा परसेंटेज चेक करना है गाइस। मतलब 20 इन दोनों का अगर फटाफट चेक कर दोगे तो आपको मिल जाएगा दिस इज 56, उसके साथ ये 30 वाला ले लो, तुरंत मिल जाएगा, दिस इज 56 इंटू 30/100, राइट। सो दिस इज नथिंग बट 86, और ये यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 16.8, तो ये मेरे पास हो गया 8 + 1 = 9, 102.8% आ गया, बढ़ गया। और उसमें ये यूज कर दिया, ये कर दिया हमने, ये कर दिया, ये 8% बाकी था अभी, तो 102.8 + 8 कर देंगे तो 110.8% हो गया, प्लस 102.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वो हम लोग को देखना है। तो 8 8 जा 64, दिस इज 6, 8 2 is 16 + 6 is 22, so this is 2, then 0 आ गया 2, 8 1 is 8, तो ऑलरेडी एक डेसिमल था, दो और यहाँ पे 8.22 समथिंग कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 110 + 8 is 118 and 8 + 2 is 1, तो this will be approximately 119%, or you can say 119.02%, right। तो यहाँ पे वही पूछा था हमारे पास कि बाय व्हाट परसेंटेज इज प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ कंपनी सी फॉर 2018 मोर देन इट्स सेल्स टर्नओवर इन 2014, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहाँ पे आंसर्स करेंगे तो दिस विल बी 119%। तो आंसर्स लिखना होगा गाइस जब हमको, तो यही लिखेंगे 90%, ऑप्शंस में जो गिवन रहेगा तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि 119.02 लिखे या 119 क्लोजेस्ट ही है, तो वी कैन राइट दिस, राइट। सो थैंक यू गाइज, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा सा आपको डिस्कस किया है उसी तरीके से आपको क्या है आगे भी सॉल्व करना चाहिए, एंड आगे भी इसी तरीके से इसको सॉल्व करते रहिए, और कहीं भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइज।